In just 5 steps, I'll tell you what agentic AI really is. But इससे आपका क्या फायदा? Simple. Agentic AI बहुत जल्दी आपके ऑफिस में आपके साथ बैठकर आपके लिए काम करेगा. And if you don't understand it today, you are not competing in the future workforce. It might sound that I am cooking up things, but the industry itself is seeing this shift. Forrester predicts that 30% of the large enterprises will make AI training compulsory because people don't understand AI well enough. Another report from Gartner warns that by this year, many people will rely so much on generative AI that their own thinking skills will get weaker. Because of this, 50% of the world organization will start testing employees without using AI to check if they can actually think on their own. For the last 2 years, the world has been distracted by generative AI, including ChatGPT, DeepSeek, Gemini, etc., etc. You're writing prompts, getting answers, writing emails faster. But that phase trained us to talk to machines. Now it's time to enter the agentic AI phase. Now let's understand agentic AI in 5 simple steps. Step 1. Input. You give a prompt, find the best flight from Delhi to Singapore under 25,000 next month. ये input है and starting point जो define करता है कि AI क्या करेगा. इस स्टेज पे AI सिर्फ जानता है कि यूजर क्या चाहता है, कैसे अचीव करना है वो नहीं जानता. Step 2. Perception, which means understanding the context. After the input, the AI agent will collect data on available flights, ticket prices, airlines, ट्रैवल डेट्स एंड लेओवर ड्यूरेशन. जब AI डेटा कलेक्ट करता है मल्टीपल सोर्सेस इंक्लूडिंग एयरलाइन वेबसाइट्स, फ्लाइट APIs, हिस्टोरिकल प्राइसिंग डेटाबेस एंड ट्रैवल रिव्यूज. स्टेप 3. रीजनिंग एंड प्लानिंग. द AI एजेंट देन प्लान्स फॉर द यूजर. वो प्राइसेस को कंपेयर करता है, फ्लाइट ड्यूरेशन एंड एयरलाइन रिपुटेशन को चेक करता है एंड कैंसिलेशन पॉलिसीज को भी. नाउ AI प्रेडिक्ट करता है कौन सा ऑप्शन यूजर के लिए बेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एयर इंडिया की फ्लाइट के चार्जेस 25,000 हैं विद 5 आवर लेओवर एंड हाई ऑन टाइम रिलायबिलिटी, एंड सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट के चार्जेस हैं 26,000 फॉर 4 आवर लेओवर. बजट के हिसाब से एयर इंडिया इज द बेस्ट चॉइस फॉर द यूजर. स्टेप 4. एक्शन. आफ्टर प्लानिंग द AI एजेंट टेक्स द एक्शन. ये ऑटोमेटिकली एयर इंडिया की फ्लाइट बुक कर सकता है और रेडी टू बुक ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है. फॉर यू द प्रोसेस एंड्स हियर, बट द AI मॉडल टेक्स द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप 5. फीडबैक लूप. द AI monitors the outcome of its actions and learns from its mistake to improve future decisions. The important point to note here is the agents operate within guardrails. Human agents define what systems it can access, what actions it can take, and where it must stop. So now we have understood what is agentic AI. It takes the input from the user, understands the context using data, plans for the user, take action, and gets better by learning from its own mistake. Companies don't want employees who can just give good prompts. They want employees who can oversee the autonomous systems without losing their own thinking. So here is the uncomfortable truth. The future employee is not the fastest executor, but the one who can define the right goal, judge whether the system made the right call, intervene when context changes, and take responsibility for outcomes. This is the human role left after agentic AI arrives. And the people who understand this early won't panic when AI enters their office. Hope you enjoyed the video. See you in the next one. Thank you. Jai Hind.